The Uttar Pradesh government, meanwhile, finds itself at the epicenter of a fresh controversy as Akhilesh Yadav's pet scheme, the Samajwadi Swasthya Seva, could come under the Election Commission's lens. As the opposition steps up its demand for renaming the scheme, the Akhilesh government has defended the use of the term Samajwadi. The Akhilesh government running into fresh controversy just a few weeks ahead of the elections. The government's emergency ambulance service has hit a roadblock, with the opposition demanding a ban against using the word Samajwadi for the welfare scheme. समाजवादी पार्टी नाम से चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाएं, समाज सेवी एम्बुलेंस सेवा, इन सभी पर सरकार को बैन लगाना, चुनाव आयोग को बैन लगाना चाहिए, अन्यथा चुनाव आयोग से लोगों का विश्वास हटेगा। But the UP Chief Minister maintains there's nothing wrong with the move. समाजवादी पार्टी ने जो योजनाएं चलाई हैं, वो समाजवादी मतलब सबके लिए, गरीब, अमीर, किसान, मजदूर, गांव में रहने वाले, शहर, सबके लिए है। और संविधान से हमने लिया समाजवादी योजना। But the BJP is questioning the motive, raising objections since the service falls under the National Rural Health Mission scheme. कि संविधान में तो बहुजन भी है, संविधान में तो भारतीय जनता भी है, तो अगर यह आड़ लेकर होगा पर समाजवादी पार्टी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, स्वाभाविक है उससे संदेश किसी एक राजनीतिक दल के बारे में जाता है, और किसी भी कृत्य से यदि राजनीतिक दल के प्रचार को बल मिलता है तो निर्वाचन आयोग को संज्ञान मिलना चाहिए। The Election Commission now taking cognizance of the issue, seeking a report into the matter. The DO has to give a detailed report on the information which you have given or we have come to know from any source, and on that the commission takes a view what action is to be taken. The project has been active since September, so many will question the opposition's timing. That said, SP's real intent in naming the service after the party also raises suspicion. Bureau Report, Times Now.